Good morning, student. I am Rajendra C. Mori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Again, welcome to all of you in this class ninth mathematics, and we already going in this particular chapter number 1 or unit number 1, that is real number system. So at last, I also provided some doubt solution questions in another video. So today, just I am going for the another one points. And before we are going on that new concepts, how to magnifying some of the points into the rational numbers, or sometimes we have to find out the rational numbers from the number line, if it will be considered that how to magnifying it. So that concepts already we have to using today in today's lecture. So let us move on that points first, and I hope that everyone has fulfilled all the questions whatever I explaining at the last. So practice question 5.1, 5.2, and ncrt questions 1.2, and everyone, uh, these all kinds of the questions, just you have to put it down in your hair book also. And one more thing, you all are worried about your main questions of it. So whether whatever the questions I put it here, either from its ncrt or from your supplementary, so those questions you compulsory completed in your pair book also. So these things is very important for you. So let us move on to the mm, first. We watch just one video, and by this video, by through this video, we understood how to magnifying these particular numbers. So let us move on it. Watch carefully this video. Successive magnification. Rani wants to hang a picture on the wall. To ensure that she doesn't damage the wall, she measures the exact length of the nail. She uses a ruler to measure it. The length is 3.6 centimeters. What if the actual length of the nail is 3.65 centimeters? That's a little difficult, but it would be somewhere between 3.6 and 3.7. We know that all real numbers have decimal expansions, and they can be represented on the number line. How do we represent 3.6 on the number line? We can split the portion between 3 and 4 into 10 parts. Then count up to 6 places from 3, and that's where you will locate 3.6. Now, let's see how to represent 3.65 on the number line. We can see that 3.65 is up to 2 decimal places, that is, the tenths and the hundredths places, which means the portion between 3 and 4 has to be divided into 100 equal parts. This seems lengthy. Is there a better way of doing this? Yes, we know that 3.65 lies between 3.6 and 3.7. So, on dividing the portion between 3.6 and 3.7 into 10 parts, we can easily locate 3.65. For that, we just need to count up to 5 places from 3.6 and we will get 3.65. Now, how do we represent the number 3.657 on the number line? Since the number given is up to 3 decimal places, we would need to divide the portion between 3 and 4 into 1000 parts. But we already know that 3.657 lies between 3.65 and 3.66. Hence, we can divide that portion into 10 parts and then count up to 7 places from 3.65 to get 3.657. This method of magnifying a portion of the number line to get the closest value is known as successive magnification. It helps to represent any real number that is recurring and non-recurring with a decimal
decimal expansion on the number line. Let's quickly see another example of representing a number using successive magnification. The distance between my house and the railway station is exactly 6.348 kilometers. Using successive magnification, this is where we can find this number on the number line. Found it? Isn't it amazing? Successive. So this is a successive magnification, how to represent our numbers into using of these magnifications, because if we want to take some inner points, so how to represent into the number line, and we just take it like this magnification, magnified lens. So you already studied into the science also that this particular magnifying this particular things, then it is displayed as a bigger. So if we have to move on to some numbers between whatever the number we select, that is using with this magnification method, so it's a very easy things. And let's move on that points first, how to represent it. So let us move on it. So let us move on to the points of successive magnification of the rational numbers. We already look out one points for the magnification methods through this video, and watch carefully this video because it's very useful to you, because of when once we have to represent any numbers, then inner number how to find. So that's why successive magnification method is useful. So let us move how to represent it. First of all, here given that some of the portions here, that is given like that. So how to successive magnification of the rational numbers is suggesting here, and let us understand that method to visualize rational number with non-terminating decimals on the number line. So how to understand, how to revise this particular method. For understanding this method, to visualize rational number with non-terminating decimals on the number line, for the purpose we will use the successive magnification. So that is particular use for the non-terminating decimals only. So let us move on it. First off is here given that visualize 6.3788 on the number line. So which are the steps we are using over here? Just we have to take it here, the different steps for that. First one, just we have to take it out the portion, draw a number line showing the integers between which the real number lie. 6.3788 ये नंबर आप याद रखना है कि इसको हमें विजुलाइज करना है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है और आपके सप्लीमेंट्री बुक में भी अवेलेबल है. So let us move on that visualize, how to visualize this 6.3788. So on the number line, draw a number line showing the integers in which the real number lines. So आपको पता है कि हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट की. यहाँ पे पहले स्टेप में हमने नंबर लाइन ड्रॉ करना है. पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है. उसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखा देते हैं. अब हमें पता है कि ये जो 6.3788 होता है वो 6 और 7 के बीच में होता है. सो जस्ट वी पुट इट हियर वन पर्टिकुलर magnifying lens between 6 and 7. So in this case the given real number lies between 6 and 7. तो जो हमें नंबर दिया गया है वो नंबर 6 and 7 के बीच में होगा, क्योंकि 6.3788 है इसीलिए. तो ये चीज तो आपको पता चल गई. सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, divide the portion between the integer into 10 equal parts to locate the first decimal digit. मतलब 6 and 7 के बीच में 10 ऐसे पार्ट करना है. So first digit starts with 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ऐसे कितने
पार्ट्स आपको रिप्रेजेंट करने, टोटल पार्ट्स आपको 10 करने 6 और 7 के बीच में। सो 6 और 7 के बीच में आफ्टर डिवाइडिंग 10 इक्वल पार्ट्स वी रिप्रेजेंट विथ द वन नंबर। 6 के बाद ऑब्वियसली 10 पार्ट है तो 6.1, 6.2, ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे 6.9 तक, और लास्ट में होगा हमारा 7। तो 6 और 7 के सेकंड स्टेप में हमने 6 और 7 के 10 पार्ट को डिवाइड कर दिया और उसको नाम नाम दे दिया इस डिजिट को 6.1 से लेके 6.9 तक। अब हम यहाँ पे यूज होते हैं क्योंकि हमारा डिजिट जो है, नंबर है, वो हमें ध्यान में रखना है 6.3788। सो 6.3 मतलब हमें मैग्नीफाइंग लेंस कहाँ पे रखना है 6.3। तो कितना स्टेप हमें मूव होना है 6 से 6.1, 1 2 एंड 3 जैसे ही मूव होंगे 6.3 हमें मिल जाएगा। दैट इज द सेकंड पॉइंट। अभी भी हमें आगे जाना है क्योंकि दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड स्टेप, हम फिर से फर्दर डिवाइड द पोर्शन बिटवीन द डेसिमल इंटू 10 डेसिमल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स, and locate the second decimal digit. The number obtained is 6.37. सो 6.30, 31, 32, 33 ऐसे करके हमें 6.3 और 6.4 के बीच में ये नंबर होना चाहिए क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है 3 के बाद हमें 7 लाना है। तो 7 डिजिट 6.37 होता है। तो 30 और 40 के बीच में भी कितने डिजिट्स हम 10 इक्वल पार्ट्स रखते जाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू कलेक्ट 6.3 एंड 6.4 के बीच में कितने पार्ट्स रखे हमने 10 इक्वल पार्ट्स। So this is the step number 3. This is the step number 4 is concerned that 6.37 and 6.38 के बीच में हमें आगे बढ़ना है 8 के ऊपर। So 6.370 के बाद 1 2 3 4 ऐसे हम चलेंगे तो 378 आएगा। 378, that is our steps of it. Then we can see that the number 6.378 lies between 6.377 and 6.379 is there. किसके बीच में आएगा ये नंबर 6.377 और 6.379 के बीच में। आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं और वही चीज आपको पेंसिल से अच्छी तरह से ये नंबर लाइन साथ में ही ड्रॉ कर दी जानी। Next one is concerned that where will the number 6.3788 lie? तो अब हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अब हमें उसको कहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली 6.3788 विल बी बिटवीन 6.3788, मतलब हमें सक्सेसर और प्रेडिसेसर जो पोर्शन हमारे माइंड में है वो हमें याद रखना है, हमें रिकॉल करना है कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया गया है उसके आगे वाला नंबर ऑब्वियसली उसके प्रेडिसेसर को कंसीडर होता है और वही नंबर के पीछे मतलब उसके बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम सक्सेसर कहते हैं। तो यहाँ पे 6.3788 किस दो नंबर के बीच में आएगा, दैट इज ऑब्वियसली 6.377 एंड 89 के बीच में। तो दैट इज वेरी इजी थिंग। Now conclusion for that, for non-terminating decimals, we can continue dividing the portion between the decimal numbers indefinitely. Thus, a non-terminating decimal, recurring or non-recurring, cannot have an exact location on the number line. So approximation can go on forever. So for non-terminating decimal, we can continue dividing the portion between the decimal numbers indefinitely। मतलब हम उसको कंटिन्यूसली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में तो कर सकते हैं, बट दिस काइंड ऑफ द अप्रोक्सीमेशन इट इज वन काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन नॉट कंसिडर एज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इट। तो ये कंक्लूजन ये हुआ कि हम मैग्नीफाई कर सकते हैं क्योंकि जितने भी डेसिमल नंबर हम आगे आगे बढ़ते जाते उतनी नंबर लाइन हम उसको इंक्रीज करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ऐसा होता है कि इट नेवर डिफाइंड लाइक दैट, it never gives us to the perfect or actual value or actual location of it, but it is a one kind of approximation we can find out for using this visualizing with this particular methods of find out the
numbers. So let us move on to the next point is there. So now let us move on to the practice question 6.1 and 6.2 that is available on your supplementary book. So it's open from here, practice question 6.1 and 6.2. So this particular exercise you have to write in your fair book, and simultaneously you also give me the homework of practice question 6.1 and 6.2. So let us move on it. First one is considered here that the portion is that for practice question 6.1 is suggesting that visualize 4.816 on the number line using successive magnification. ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हाउ टू विजुलाइज दिस 4.816। आपको ये नंबर है अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो आपको पहली चीज जिस जिस तरह से यहाँ पे मैग्निफिकेशंस आपको बताया वैसे ही मैग्निफिकेशन से आपको इतनी ही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। पहली नंबर लाइन आपने ड्रॉ की 0 से 5 तक, उसमें 4 और 5 के बीच में ये नंबर आएगा। तो सेकंड जब आप करेंगे तब वो 4 और 5 के बीच में कितने पार्ट्स इक्वल हम रखेंगे, 10 पार्ट्स। उसको हम नाम देंगे 4.1, 4.2, 4.3 लाइक दैट। एंड थर्ड जो पोर्शन है वो क्योंकि हमें आगे जाना है 4.816, तो हम 4.8 और 4.9 के बीच में ही वो नंबर आएंगे। तो फिर से हम रिप्रेजेंट करेंगे 4.80 और 4.90। तो थर्ड जो लाइन है इट रिप्रेजेंट 4.80 टू 4.90, उसमें कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 10। सो इट बिकम्स 4.81 टू लेके 89 तक हमने पार्टीशंस उसके रख दिए। बाद में हमें देखना है हमारे नंबर साथ में देखते जाना है कि 4.81 और बाद में 6 है, तो 4.81 और 82 के बीच में ये नंबर आएंगे। तो नेक्स्ट वन नंबर लाइन हम विजुलाइज करेंगे 4.810 से लेके 4.820 तक, और 810 से फिर 10 पार्ट्स हम रखेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा 1 2 3 4 5 6 स्टेप पे 4.816 विजुलाइज नंबर हो जाएगा। तो ये चारों चार पोर्शन है, यही तो आपका आंसर रहता है। समझ में आ गया ना कि सीधा वही ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, बट आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। हाउ मेनी नंबर लाइन्स यू रिप्रेजेंट, एक्चुअल में जितनी नंबर लाइन, जब तक हमारा वो नंबर विजुलाइज ना हो जाए तब तक हमें ये नंबर लाइन पे आगे बढ़ते जाना है। तो 6.1 का ये आंसर पूरा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस इन योर पेयर बुक, बट पेंसिल से अच्छी तरह से ये नंबर लाइन आप ड्रॉ करना। So this is a 6.1, now this is a 6.2 is concerned। अब देख सकते हो कि 6.2 के पोर्शन में जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन दिया गया है -8.9191 सो ऑन द नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल डिजिट। अब देखो ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। आपको अप्रोक्सीमेशन कितने डिजिट तक जाना है, लाइन अप टू 3 डेसिमल डिजिट्स, मतलब डेसिमल से 3 डिजिट तक का ही अप्रोक्सीमेशन आपको करना है, मतलब 8.919 तक। पीछे वाला जो 1 है वहां तक हमें जाना नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वंस वी हैव टू अप्रोक्सीमेट गिवन इनटू द क्वेश्चन दैट टाइम, डेसिमल के बाद इतने नंबर्स आपको पॉइंट आउट किए हैं, इतनी डिजिट तक ही आपको अप्रोक्सीमेशन करना है। बाकी जो भी डिजिट बचती है उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। मतलब व्हेनेवर यू मैग्नीफाइंग एनी नंबर्स अप टू विच डेसिमल digits that you have to consider first from the question. Is it clear? So here given that -8.9 is concerned, so it is obviously considered the number line 0 से लेके -1, मतलब हमारी जो नंबर लाइन है वो कैसे रिप्रेजेंट होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो पूरी नंबर लाइन है वो -0 से लेके -10 तक हम जाएंगे, -1 -2 -3। और स्पेसिफिकली ये जो नंबर हमारा है -8.9, दैट इज ऑब्वियसली -8 और 9 के बीच में आएगा। तो ये चीज़ आपको मेंशन हो गई। अब ये हो जाने के बाद फिर से -8 और 9 के बीच में हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे।
और उसमें 8.1, 8.2 अप टू 8.9 तक जाएंगे, लाइक दैट। तो 8.9 तक आप पहुंच गए, तो 8.9 और आगे जाना है, मतलब 8.9 तक आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो 8.9 और 9 के बीच में, 8.90 और 9.00 के बीच में आपको 10 यानी थर्ड वन नंबर लाइन है, वो बिटवीन द -8.90 और -9.0 के बीच में यू हैव टू रिप्रेजेंट टू और नंबर्स, जिसको आप बोलेंगे 8.92 और 8.91, क्योंकि आपका 8.91 इज कंसिडर्ड दैट। तो 91 हुआ तो ऑब्वियसली किन दो नंबर के बीच में आएगा, 8.91 और 8.92, बट दैट इज माइनस। सो 8.910 और 8.920 लास्ट वन नंबर लाइन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, उसमें दो नंबर के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है 919 तक। तो 911 से लेके 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918 एंड 919। सो दैट वे वी हैव टू रिप्रेजेंट फुल्ली नंबर। अभी हमें डेसिमल के बाद तीन नंबर तक ही करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से जो चार नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए, दैट इज द आंसर ऑफ 6.2। Now let us move on to the next point, that is the practice question 6.1 and 6.2। ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के होमवर्क में भी करना है और आपकी फेयर बुक में भी लिखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.1 एंड 6.2 both are you have to write in your fair book and you have to simultaneously send me as today's homework. So let us move on to the next point। आज हमने ये चीज़ पूरी सीख ली है कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रेशनल नंबर्स स्पेसिफिकली इनटू द नंबर लाइन, and this representations we understands from the approximations over here। जो अभी हमने approximation का पोर्शन लिया, approximation में कितने स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए, तो ये आपके एस बी 11 पेज के ऊपर से मैंने आज ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट किया। और लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 जो है उसके दो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको मेंशन किए हैं, 6.1 एंड 6.2। ये आज के होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 में 6.1 एंड 6.2 ये बोथ यू हैव टू write down in your today's homework। I hope that this particular portion is very easy for you। You can also, if you have the NCERT book, then you can also directly see that concept from the NCERT book, and whatever the examples is given, you can also write down these examples in your pair book। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि whatever the things explaining today for the successive magnifications method over here, that you have to read out carefully from your supplementary book as well as from your NCERT book, and then after you have to perform these two questions 6.1 and 6.2 in your fair book, and you have to send it as today's homework। I hope that you understood well of these concepts, and if you're having any kinds of the doubts, then you can ask me। Thank you very much for being with us। We will meet very soon into the next lecture। Thank you very much।